Okay, so today we have the AKU EV examination paper of April May 2019 और आज की इस वीडियो में हम 2019 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और देखते हैं कि यहाँ हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है। इन अ ट्रांसवर्स वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स। सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है ट्रांसवर्स वेव की। सो दिस क्वेश्चन जो है वो सिंपल एक डेफिनेशन क्वेश्चन है। और अगर हम वेव्स को देखें तो वेव्स में हमने यहाँ पे दो टाइप्स की वेव्स को डिफरेंशिएट किया था, दैट वर मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स के अंदर हमने उन्हें क्लासिफाई किया था इनटू टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स। और इन मैकेनिकल वेव्स को हमने क्लासिफाई किया था इनटू ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। So transverse wave or longitudinal wave, they both are the types of mechanical waves, जिसमें हमने पढ़ा था कि those wave that requires medium for their propagation are known as mechanical wave। और ये जो दो टाइप्स हमने बेसिक डिफाइन किए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये जो टाइप्स हैं ये हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव and the particles of the medium moves perpendicular to the direction of wave. So this is the direction of particles and this is the direction of waves. अगर वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट्स perpendicular to the direction of wave, so this is a type of transverse wave. Similarly, when a wave is traveling in a certain direction and the particles of that medium in which the wave is propagating, the particles move along the direction of wave. Particles अगर along the direction of wave move करते हैं, so those are longitudinal wave, and in which the wave in which particles move perpendicular to the direction of wave. So perpendicular to the direction of wave अगर move करते हैं particles, so those are transverse wave. So अगर हम options में देखें, so we have two options that are related to these two definitions, parallel to the direction of wave, so this will be longitudinal wave, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर और दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर होगा सबको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर number 10, simple harmonic motion and waves. So this is chapter number 10, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज रिपल टैंक। और रिपल टैंक से रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है ना। रिपल टैंक, द फैक्टर्स दैट चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव हमने पढ़ी थी रिपल टैंक के अंदर। बेसिकली हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े थे रिपल टैंक में, दैट वाटर वेव्स को हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग रिपल टैंक। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वहां हमने जो है वो तीन
प्रोसेसेस बेसिकली पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स. सो यहाँ रिफ्रैक्शन की बात की है, और रिफ्रैक्शन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, सो इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव्स. सो बेंडिंग मीन्स जब चेंज इन डायरेक्शन. बेंडिंग ऑफ वेव्स मीन्स वेव प्रोपगेट करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. सो दिस चेंज इन डायरेक्शन कुड बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल and the other is away from the normal. So these two are the bending, or these two are the changes in direction, that is towards the normal and away from normal. सो इनको फर्दर देखें, टूवर्ड्स दी नॉर्मल कब बैंड होती है लाइट, व्हेन सॉरी वाटर वेव्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम deep region of the water to the shallow region of the water. Similarly, away from the normal, water waves bend hoti hai when they move from shallow region into the deep region. So, characteristics को अगर हम देखें, so we have the wave equation as v is equals to lambda f. So, इन तीनों characteristics को अगर हम देखें, frequency, wavelength and velocity. फ्रीक्वेंसी हमेशा इस प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. सिमिलरली शैलो टू डीप रीजन ट्रैवल करते हुए भी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. Remaining two characteristics को देखें, so these two are directly proportional to each other, whereas frequency remains constant. So when wave moving from deep to shallow region and bending towards the normal, these both characteristics of the wave, that is wavelength and the velocity, they both decreases. Simultaneously, when water waves are moving from shallow to deep region, they bend away from the normal, and the characteristics of the wave, that are wavelength and the velocity, they both increases simultaneously. So, question की तरफ move करें, so we have three options: wavelength, frequency, and the speed of the wave. These three are the basic characteristics of the wave. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रिफ्रैक्शन के दौरान जो है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कि यहाँ मैंने बताया कि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो. सो वी कैन सी द चेंज इन द वेव लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वेव. सो 1 and 2 is the correct answer for this question. Okay, so let's move to another question, that is question number 3. And question number 3 is related to the chapter number 11, sound. So question को देखते हैं. Hamid is playing a guitar. As he stops playing, the vibration of its string gradually decreases. जब हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है या वाइब्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती हैं एज द टाइम पासेस. सो अगर हम एक फिनोमेना को रिकॉल करें जो कि हमने यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, दैट इज द डैम्पिंग. डैम्पिंग कह लें हम उसको, या फिर वी कैन से दैट डैम्प्ड ऑस्किलेशन. So let me correct one thing, that this question is not related to sound. This question is related to actually chapter number 10, simple harmonic motion. So damping एक process हमने पढ़ा था, the process in which some part of the energy of a vibrating body is wasted in some non-useful form of energy. सो एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो उसका एनर्जी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और सम अदर टाइप ऑफ एनर्जी.
so that the amplitude of the vibration decreases gradually. तो एक्चुअली यहाँ पर भी हमें इनडायरेक्टली डैम्प ऑस्किलेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या चेंज आता है जब एक बॉडी डैम्प ऑस्किलेशन पजेस करती है. सो दिस इज द चेंज दैट अकर्स इन डैम्प ऑस्किलेशन. जो डैम्प ऑस्किलेशन होती है उसमें वाइब्रेटिंग बॉडी की एनर्जी डिक्रीज होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड एट लास्ट बॉडी जो है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, वो एट मीन पोजीशन पे आके रुक जाती है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज 2, that is option number B. Okay, so let's move to the question number 4. और ये question number 4 अगर previous past papers आपने देखे हों तो वहाँ पर भी जो है वो question को हम देख चुके हैं. So this question is actually from chapter number 11, sound. So in this question, four vibrating bodies X1, X2, X3 and X4 are producing sound. The object that produces the loudest sound. So in this question, actually the question is asking about the factors that affects the sound, factor affecting the loudness of sound. So अगर हम recall करें तो we have studied the area of the vibrating body and the amplitude of the vibrating body. Similarly, we have studied the distance from vibrating body. So these were the factors that influence the loudness of a sound. Greater the area, and greater will be the loudness of the sound. Similarly, greater the amplitude of the vibrating body, greater will be the loudness of the sound. And if we talk about the distance from the vibrating body, so as we move away from the vibrating body, the loudness that is observed for a certain observer decreases. So these two factors are actually directly proportional, and this is the factor that is inversely proportional. So यहाँ बात हो रही है सवाल में एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. सो अगर हम कंपेयर करें इन चारों ऑप्शंस को, इन विच द फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास एरिया 5 है और वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है इट इज 4. सो वी हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन इन विच वी हैव द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी simultaneously with the greatest amplitude. So we have these two options with the greatest area, out of which this is the amplitude of the vibrating body that is greater than previous one. So the most obvious option for this question is option number D, in which the vibrating body has the greatest area of 10 meters square, and the amplitude of the vibration is 5 centimeters. Okay, so let's move to another question, that is question number 5. So in question number 5, we have a question that is related to chapter number 12, that is Geometrical Optics. So question को read करते हैं. An object is placed at a distance of 12 centimeter. So we have a distance of object distance we are given with 12 centimeter. So P हमारे पास 12 है. In front of a spherical mirror, हमारे पास एक spherical mirror के सामने एक object को place किया है. As a result, image is formed behind the mirror. अब image जो हमारे पास form हो रही है, it is behind the mirror. और object का image का जो distance है, that is 6 centimeter. So we have image distance q that is equal to 6 centimeter,
and the object is 12 centimeter in front of the mirror. So one more thing, that we have this distance will be negative just because the image is formed behind the mirror, and image formed that is behind the mirror is known as virtual image. We are we are with the virtual image that is formed with the spherical mirror. So finally हमें focal length calculate करने को कह रहे हैं, तो focal length हम calculate करते हैं by using the mirror formula. Okay, so here we have the solution. The formula for the focal length is PQ over P plus Q, in which we have substituted the values, and finally we have this answer minus 12 centimeter. So we have 12 centimeter in which the negative sign is missing. And what about the negative sign? So we know that the negative focal length means we have a diverging mirror. नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है हमारा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. एंड अगर हम डाइवर्जिंग मिरर को देखें, सो डाइवर्जिंग मिरर इज द कॉन्वेक्स मिरर. सो यहाँ जिस मिरर की बात हो रही है वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है. Okay, so let's move to the other question, that is question number 6. और इस question number 6 को देखें, so this is also related to chapter number 12, optics. So when a ray of light enters from a rare medium to a dense medium, so there is a change of medium. It's mean this is talking about the process that is known as refraction of light. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हम वन वर्ड के अंदर कॉल करें या इसका मतलब देखें, सो दिस मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट और द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेव. सो जैसे कि मैंने वहाँ वाटर वेव्स के अंदर भी इस प्रोसेस को बताया था कि बेंडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड द अदर इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दो तरह की बेंडिंग हमारे पास होती है. सो टूवर्ड्स द नॉर्मल की अगर हम बात करें तो वेव्स दैट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू द डेंस मीडियम एंड द rays moving away from the normal when the rays are moving dense medium into the rare medium. So ये दो हमारे पास टाइप ऑफ बेंडिंग होती हैं. So यहाँ बात हो रही है from rare medium to dense medium. So it is obvious that the ray of light will bend towards the normal. So the correct option for this question is option number A, that when a ray of light enters from rare medium into a dense medium, it will bend towards the normal. Okay, so इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. The ray of light parallel to the principal axis. So this is also question that is related to chapter number 12, optics. So a ray of light parallel to the principal axis. अगर इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है and it is refracted by a convex lens. So after refraction, it will pass through optical center, principal focus, or the radius center of curvature. So अगर हम अपने रूल्स को डिफाइन रिकॉल करें, सो हमने बेसिकली जो है वो कुछ रूल्स सीखे थे इन विच लेट्स से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, we have the convex lens at the center. This is the point that is known as optical center. So अगर हम मार्क करें F और 2F, so the first rule we have studied, the incident ray parallel to principal axis passes through principal focus, and the second rule was incident ray passing through the principal focus, and after refraction it becomes parallel to the principal axis. Similarly, the third rule is incident ray striking the optical center pass through straight through it.
सो यहाँ बात हो रही है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. So this is obvious that this ray will pass through principal focus after refraction. So the correct option for this question number 7 is B. That is, if incident ray is parallel to principal axis, so after refraction, this refracted ray will pass through principal focus. Okay, so let's move to the other question, that is question number 8. And once again, this is chapter number 12, optics. So double convex lens is used in a simple microscope. एक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. सो दिस इज द लेंस दैट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी गई है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास. सो रिकॉल करें अगर हम अपनी डायग्राम को और द केसेस जो हमने किए थे आफ्टर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस. सो उसको अगर हम रिकॉल करें, सो जब हम लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ओ प्लेस करते थे, सो हमारे पास जो इमेज बनती थी इट वाज मैग्नीफाइड एंड द वर्चुअल फॉर्म ऑफ इमेज. सो वर्चुअल इमेज हमारे पास फॉर्म होती थी कुछ इस तरह से. हमारे पास डायग्राम थी, हम रफली डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं फॉर जस्ट रिकॉलिंग पर्पस. सो इस तरह की डायग्राम फॉर्म होती थी, और यहाँ हमारे पास एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती थी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पूछा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, के ऑब्जेक्ट को कहाँ लोकेट या पोजीशन करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. So as we can see that the object is placed between the lens and the principal focus. So on the principal focus is the wrong answer. On the center of curvature or 2F, this is a wrong answer. Between principal focus and optical center. So this is the correct answer. हमारा simple microscope में जो object की location होती है वो principal focus और optical center के बीच होती है. सो रिमेनिंग जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी डिफरेंट एज अ पोजीशन एक्ट करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को वहां प्लेस करें, बट सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा ऑब्जेक्ट फॉर श्योर मौजूद होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में. Okay, so let's talk about the question number 9, and this question is from our chapter number 13, Electrostatics. Okay, so question number 9 को देखते हैं. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth. ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, और इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जब हम ग्लास रॉड को पीस ऑफ सिल्क के साथ रब करते हैं, सो क्या होता है. व्हेन अ ग्लास रॉड रब विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. सो हमने देखा था कि जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो बाय द रबिंग प्रोसेस द ग्लास लूजेस द इलेक्ट्रॉन. ग्लास जो है वो नेगेटिव चार्जेस को लूज कर देता है. दिस इज व्हाई दैट ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज, and these negative charges are taken by the piece of silk cloth. This means this piece of silk cloth will become negative charge and the glass rod will become the positive charge. So the correct option for this question is question option number D. Okay, so next question we have is question number 10. And this question number 10 is again from our chapter number 13, Electrostatics. And the topic is Coulombs Law. So the question states that the Coulomb force between two identical charges is 80 Newton.
सो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज 80 न्यूटन. एंड क्वेश्चन में कहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इस कूलम्स फोर्स पे. सो द डिस्टेंस हम जो है वो डबल कर देते हैं दैट इज 2r. और अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन फोर्स एंड distance between the charges is this, that force is inversely proportional to the square of the distance between the charges. So अगर फोर्स डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो लेट्स सी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. सो अगर हम डिस्टेंस को यहाँ डबल करके देखें कि Q1 Q2 ओवर 2R square. So this will become KQ1 Q2 over 4R square. So as we can see that the force will reduce by 4 times. Force will reduce by 4 times. सो बिफोर डबलिंग द डिस्टेंस हमारे पास जो फोर्स थी वो थी 80 न्यूटन्स. सो अगर हम फोर्स को 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं सो द न्यू फोर्स आफ्टर द doubling the distance between the charges we will get 20 newtons. So the correct answer for this question number 10 is option number A, that is 20 newtons. Okay, so let's move to the other question, that is question number 11. And this question is from chapter number 14, Current and Electricity. Okay, so the topic is the cost of electrical energy when the cost of 1 kilowatt hour is given. So यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास cost of energy given है 12 rupees per kilowatt hour. So the first thing we are given is the cost of energy जो कि हमें given है. ठीक है, और फिर आगे देखते हैं 100 watt bulbs glows for 8 hours. सो हमारे पास पावर गिवन है वॉट्स के अंदर 100 watts एंड वी आर गिवन विद द टाइम इन अ डे. हमारे पास एक दिन का जो है वो टाइम यहाँ पे मौजूद है 8 hours. सो पर डे एनर्जी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है कि एक दिन के अंदर जो है वो एनर्जी कितनी कैलकुलेट कंज्यूम होगी और उसकी कॉस्ट हमें बतानी है. सो अगर हम कॉस्ट को देखें, कॉस्ट से पहले जो है वो हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे कि हमने वहाँ फॉर्मूला भी पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000. So this time is measured in hours and this power will be in watts. And this 1000 is for the as a conversion factor of kilo watts into kilowatt. तो हमारे पास power given है 100 watts and the time we have is 8 hours in a day. और हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से. सो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इन अ किलोवाट आवर और साथ साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट कॉस्ट से, दैट इज 12. सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर. सो इस आंसर को हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर यहाँ हमारे पास सोल्यूशन के बाद आया है, दैट इज 9.6 rupees for our day. So the correct option we have is option number B for this question number 11 from current and electricity. Okay, so let's move to the question number 12, that is also from our chapter number 14, current
and electricity. Okay, so question को अगर हम देखें 12 that it says that the earth wire in electrical appliances is connected to which of this following option. So फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यूज. फ्यूज हमारे पास एक अप्लायंस के अंदर लगी एक छोटी सी डिवाइस होती है, और इस फ्यूज के बारे में अगर हम रिकॉल करें, सो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर. ये जो फ्यूज है हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है. बिल्कुल इसी तरह से स्विच बटन को देखें तो स्विच बटन हमेशा हम जब कनेक्ट करते हैं, सो द स्विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट अप्लायंस, जो कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटल केस. और मेटल केस के साथ हमेशा हम ग्राउंड वायर और अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, ताकि बाय एक्सीडेंटली अगर कोई लाइव वायर टच हो जाता है विद द मेटल केस, दैट विल मेक द मेटल केस लाइव, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. सो हम हमेशा अर्थ वायर को मेटल केस के साथ लगाते हैं, ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो या फिर जो है वो बहुत एक्सेस ऑफ करंट पास हो जाए, सो वो सब तमाम करंट जो है वो मेटल केस से अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाए. So let's come to question number 13, or this chapter, question number 13 is from our chapter number 15, Electromagnetism. Okay, so strength of magnetic field. Strength of magnetic field around a current carrying conductor. So magnetic field strength की बात हो रही है. So करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने डिफरेंट टाइप के कंडक्टर देखे थे. इफ वी हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी स्ट्रेंथ के हमारे पास दो फैक्टर्स मौजूद होते हैं. स्ट्रेंथ के उन दो फैक्टर्स को रिकॉल करें. सो उनके जो फैक्टर्स थे, वी हैव द अमाउंट ऑफ करंट, कि जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ. जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. सिमिलरली द सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. हम कंडक्टर से जितना दूर होते जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी. सो ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्ट्रेंथ of magnetic field is weak near the conductor, so this is the wrong answer, because near the conductor the strength of the magnetic field is strong. So correct option for this is the stronger near the conductor. अगर जो है वो हम कंडक्टर के करीब होंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी. Okay, so let's come to question number 14. So question number 14 is from chapter number 15, Electromagnetism. So the magnetic force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field will be zero when the direction of current in the conductor is. सो मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वल टू बी आई एंड एल, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ए बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, I is the amount of current, and L is the length of the conductor that is placed inside the magnetic field. So ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स थे उस फोर्स के
जो कि अप्लाई होती है कंडक्टर पे जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं. So for example, we have these two poles, north and south poles, and this is the magnetic field lines from north pole towards the south pole. अगर इस फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं इन विच लेट्स से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो the direction of current, conventional current in this diagram is in this way. This is the direction of current and this is the direction of magnetic field. So for the application of this force, the current or the direction of current should be perpendicular to this magnetic field strength. So ये जो force है, we can have this force as 0 and we can have this force as maximum. When this force is 0, when the magnetic field strength and the current are parallel. अगर ये दोनों पैरेलल हो like in the same direction or in the opposite direction, the force is 0 and for this force will be maximum when the magnetic field strength and the amount of current or the direction of current is perpendicular or they have 90 degree between them. So let's see about the correct option. So the question में हमें कहा था when the direction of current in a conductor is perpendicular to the direction, oh okay sorry, perpendicular के केस में जो है वो मैग्नेटिक ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम होती है. क्वेश्चन में हमें पूछा था कि दिस फोर्स विल बी 0. So the correct option is parallel to the magnetic field. अगर magnetic field के parallel होगी direction of current, so this force will be 0. Okay, so let's talk about question number 15. In electromagnetism, so again this is our chapter number 15, electromagnetism. So in electromagnetism, according to Fleming's left-hand rule, Fleming left-hand rule की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे. And अगर हम recall करें Fleming's left-hand rule को, so this rule describes the direction of magnetic force. असल में ये rule हम use करते हैं for the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया BIL के. और इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसमें हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच इस तरह से करते हैं कि हमारी जो थंब, फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर और साथ साथ मिडल फिंगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो. सो लेट्स से दिस इज द इंडेक्स फिंगर और ये हमारे पास आ गई मिडल फिंगर. सो दिस इज थंब, दिस इज इंडेक्स फिंगर और वी कैन से फोर फिंगर and this is our middle finger. So अगर हम जो है वो उसको रिकॉल करें जो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था, so thumb is force, middle index finger is magnetic field and this middle finger is the current. So we can memorize or recognize these fingers as F, B, I. FBI असल में डायरेक्शंस हैं इन तीनों की जिसमें तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. F is force that is represented by thumb. B is the magnetic field represented by index finger. और I is the current that is represented by middle finger. सो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें थंब की डायरेक्शन पूछी है. सो थंब ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Okay, so let's come to our question number 16.
So question number 16, again we have chapter number uh, 15, electromagnetism. So when a steady current passes through a current carrying conductor as shown in the diagram or figure, the direction of magnetic field lines will be. So अगर हम जो है वो recall करें, so this rule is known as right hand grip rule. सो राइट हैंड ग्रिप रूल अगर हम इस कंडक्टर पे अप्लाई करेंगे, सो वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स. थंब हमारे पास यहाँ इस रूल के अंदर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और साथ साथ इसके अंदर जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती हैं. सो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें अपनी इस राइट हैंड की, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब, एंड दीज कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड. सो अगर हम देखें, सो दिस कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इट्स मीन दीज टू ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम इन फिंगर्स को देखें, सो दीज फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी. Okay, so let's move to our question number 17, that is from chapter number 16, Basic Electronics. So all of the following are the basic operations are of Boolean algebra except one. So यहाँ हमारे पास 4 ऑपरेशन गिवन है बूलियन एल्जेब्रा से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें that is the not the basic operation but the logic gate. So we have this correct option for this question is NAND gate. एंड अगर हम रिकॉल करें नैंड गेट को, सो बेसिकली नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट. सो इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, वन इज नॉट ऑपरेशन एंड द अदर इज एंड ऑपरेशन. रिमेनिंग ऑल 3 आर द बेसिक ऑपरेशंस इन द बूलियन अलजेब्रा. जबकि जो नैंड गेट हमने पढ़ा था और नॉर गेट जो हमने पढ़ा था, वो दोनों जो है वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, बिकॉज वहां पे 2 से 2 जो है वो लॉजिक बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर डी. सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. This question number 18 is from our chapter number 17, और चैप्टर नंबर 17 हमारे पास था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT. So technology is improving day by day. Now in light in weight, small in size, and less power consuming laptops models are available in the markets. All of the following components of information technology, हमारे पास जो options मौजूद हैं वो तमाम basically components हैं किस चीज के, information and technology के, that are obviously that are used to make this possible, जो कि ऊपर statement में बात की गई है, except for the one. सो अगर हम देखें, सो रैम एक्चुअली रैंडम एक्सेस मेमोरी, that is the component of most of the devices. Similarly, we have ROM, read only memory,
जो कि एक फिजिकल पार्ट होती है किसी लैपटॉप्स की या किसी एक लैपटॉप्स में या फिर दूसरे इस तरह की डिवाइसेस में. Similarly, hard drive or hard disk is actually a physical part of the laptops. So the correct option for this question number 18 is World Wide Web, that is used to access any address throughout the world. जब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमेशा वी यूज www, that stands for World Wide Web. So this World Wide Web is not actually a physical part or physical component of any information technology. The remaining three options are actually the basic physical components होते हैं जो कि इस ICT devices के अंदर use होते हैं. So let's come to question number 19. 19 को देखते हैं. और this question number 19 is also related to our chapter number 17, that is information and communication technology. So this question states that all of the followings are the names of search engines. Search engines हम use करते हैं for the access of different websites जिसमें हमारे पास बहुत सारे search engines मौजूद हैं. So we have to pick out the one option that is not a search engine. अगर हम इन तमाम options को देखें, in which we have Bing, Yahoo, Google and Chrome. So odd one out को अगर हम यहाँ पर देखें, so we have the obvious option, that is option number D. So Chrome is basically a browser. क्रोम जो है वो बेसिकली एक ब्राउजर है जिसके थ्रू वी कैन एक्सेस ऑल दी search engines. Either it is Bing, it is Mozilla, it is Internet Explorer, Yahoo और Google. ये तमाम जो है वो असल में सर्च इंजन्स हैं, जबकि क्रोम जो है वो एक तरह का समझ लें ब्राउज़र है जो कि हम यूज़ करते हैं बाकी तमाम वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए. Okay, so let's come to question number 20. Question number 20 की तरफ मूव करते हैं. So question number 20 में we have which of the following is not a part of cathode ray oscilloscope? So this question is from chapter number 16, basic electronics. और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें इन चार पार्ट्स में से आइडेंटिफाई करना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part of a cathode ray oscilloscope. CRO के बेसिक हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे. The first part is the electron gun. पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है. दूसरा पार्ट वी हैव अ सिस्टम ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. हमारे पास एक सिस्टम ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो कि यूज होती हैं कैथोड रे बीम्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए. एंड द लास्ट पार्ट वी हैव इज ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक पार्ट्स होते हैं एक सीआरओ के अंदर. or the odd one out is the option number A, that is armature. Armature को recall करें तो we have studied this armature as a part of a direct current motor and a alternating current generator. DC motor और AC generator के अंदर हमने इस armature को use किया था. So let's come to our next question, that is question number 21. And this question number 21 is from our chapter number 18, radioactivity.
सो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक था दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. So according to the Rutherford model, the positive charge in an atom is concentrated at its nucleus at the circular orbit of the atom, uniformly spread it throughout the atom or at a certain distance from its nucleus. सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक थ्योरी थी जिसमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. और उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि रदरफोर्ड स्टेटेड दैट the center part of the atom is very dense and positively charged, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस का. और यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो इसी से रिलेटेड सवाल पूछा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिवली चार्ज जो एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, इट इज concentrated at the center of the atom and this center we call a nucleus. वो जो सेंटर पार्ट है एटम का उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. So let's come to question number 2, that is chapter number again 18, radioactivity. Isotopes of an element can be identified by their. So isotopes की हमारे पास definition actually पूछी गई है. So isotopes actually are those atoms that have the same atomic numbers, वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर A. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी आइसोटोप्स के बराबर होते हैं जबकि उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सिमिलर नहीं होते. न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स के, जिसकी वजह से उस न्यूक्लियस का, उस एटम का जो है वो मास डिफरेंट हो जाता है. सो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है आइसोटोप्स को, सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय देयर न्यूट्रॉन नंबर. सो चार्ज नंबर और दी एटॉमिक नंबर को देखें तो किसी भी आइसोटोप्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स हों तो उनका चार्ज नंबर हमेशा सेम होता है. सो उनका मास नंबर डिफरेंट होगा और ऑब्वियसली उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होंगे. चार्ज नंबर जो है वो तमाम आइसोटोप्स का सेम होता है. लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखें तो तम तीनों आइसोटोप्स दैट आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीशियम, तमाम का चार्ज नंबर सेम होगा बट दे ऑल हैव द different mass number and different neutron number. So the correct option for this question is 1 and 3, that is option number C. Okay, so let's move to the next question, that is question number 23. And question number 23 में let's see क्या कह रहे हैं. Gamma rays have the penetration power that is. So गैमा रेस की यहाँ बात हो रही है और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट इज पेनिट्रेशन पावर. और पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? किसी भी रेडिएशन की एबिलिटी कि वो किसी मैटर में कितना डिस्टेंस कवर करके एंटर हो सकती हैं उस मैटर में या उस मीडियम के अंदर. दिस इज नोन एज द पेनिट्रेशन पावर. सो अगर हम गैमा रेस को देखें, सो हमने स्टडी किया था दैट गैमा रेज आर द लीस्ट रिएक्टिव रेडिएशन. ये जो गैमा रेज हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं बिकॉज दे हैव नो चार्ज. इन रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. साथ साथ दे हैव अप्रोक्सीमेटली नो मास बिकॉज दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, packets of electromagnetic waves or electromagnetic energy. So these are the packets with the least reactive with matter and have no charge and
no mass, जिसकी वजह से हमने कहा था कि these gamma rays do not utilize their energy in the ionization, but actually these energy of the gamma rays is used to penetrate into the matter. So alpha, beta और gamma rays के अंदर हमने compare किया था that alpha, beta and gamma, among those the most penetrating power of the is the most penetrating ability is of gamma rays, and the least penetrating is the alpha rays, because alpha rays utilize करती हैं अपनी most of the energy to ionize the atoms of that medium. So let's see what is the correct answer. So less than alpha but and beta rays, more than alpha and beta rays, less than alpha but more than beta, or more than alpha but less than beta. So correct option for this question number 23 is option B, that the gamma rays have the penetration power that is more than alpha rays and beta rays. बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादा होती है gamma rays की penetration ability. Okay, so let's come to question number 24. This is again chapter number 18, and our previous question was also from chapter number 18. Okay, so if a radioactive element has a half life of 60 seconds, so half life एक element की 60 seconds है, और half life को अगर हम recall करें तो half life is a time in which the total quantity of a certain radioactive substance reduced to half. जिस time interval में किसी भी substance radioactive substance की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाए तो उस टाइम को वी कॉल हाफ लाइफ. So the quantity of the quantity of the isotopes after 120 seconds. So हमारे पास half life यहाँ पे given है 60 seconds, and the total time we are observing that sample is 120 seconds. So अगर हम इस total time को देखें, so इस total time में हमारे पास जो radioactive element या substance है, it will observe 2 half lives. इस टोटल टाइम के अंदर हमारे पास 2 हाफ लाइफ आएंगी. सो अगर हम देखें, सो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ the quantity is reduced to half, and after second half life the quantity will become half of the half, that is equal to 1/4. So दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो टोटल क्वांटिटी है हमारी इनिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, इट विल रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल amount of radioactive substance. Okay, so let's come to the question number 25. That is the last question of this paper. And obviously, this is the related to question, chapter number 18, radioactivity. Okay, so nuclear fission reaction can be produced in uranium-92-238 by the bombardment of which type of neutron? So ये जो फिशन रिएक्शन है जिसमें हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं ऑन द एटम ऑफ दिस यूरेनियम 92-238, एंड दिस यूरेनियम जो हमने इक्वेशन लिखी थी, लाइक न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन टू अ यूरेनियम 92-238, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, एंड इट इज स्प्लिटेड इनटू krypton and barium with the production of 3 neutrons as well. So krypton barium के साथ साथ हमारे पास यहाँ 3 न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म होते हैं. So this neutron is actually a slow neutron, slow moving neutron, जो कि हम बम्बार्ड करते हैं on that neutron. और साथ साथ यहाँ जो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो कि जिसको हम
जिसकी स्पीड हम रिड्यूस करवाते हैं so that to continue a chain reaction. So the correct option for this question is the slow neutron, and we have option number B, in which we have the correct answer of 25, that is two only slow neutrons.